Hello students, today we will discuss electric field intensity at any point due to electric dipole. It is a general position. With the help of it, we can find electric field intensity in equatorial position as well as axial position. So we will discuss today electric field at any point due to electric dipole. First, we will draw the diagram. How? Let AB is an dipole made by minus q and plus q charges, and its midpoint is O and length is 2a. Midpoint is O and length is 2a. So its dipole moment. Let a dipole AB the dipole moment P equals to Q into 2A, and its direction is always negative to positive charge as shown in diagram. P is directed minus Q2 plus Q charge as shown in diagram. This is the direction of vector P. Suppose we have to find electric field intensity at point C at an angle theta to the direction of P. We have to find electric field intensity at point C at distance r from midpoint of dipole AB. For this, we will take the component of P along OC and perpendicular to OC. We have to find E at point C. Component of vector P along OC will be, the component will be P cos theta. This is P cos theta. So point C will be in axial position for this dipole, whose dipole moment is P cos theta. So electric field at C, let it is E1, and this dipole is named as A dash B dash. E1 equal 1 by 4 pi epsilon naught 2p, and P will be taken as P cos theta. 2p upon RQ, and this distance is R, so we will take RQ, and direction along O to C, it will be the direction of E1 vector. Now
another component of AB means this dipole. Component of P vector perpendicular to A dash B dash, which this one. Let this is B double dash A double dash. So C point will be now in equatorial position for A double dash B double dash perpendicular to A dash B dash will be P sin theta. This dipole has dipole moment P sin theta. So electric field again at C. Due to this, let it is E2. E2 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught in equatorial position. P means P sin theta upon R cube. And direction will be this. This is E2 vector, E1 vector. Direction as shown in diagram. So net electric field at C will be by vector method. Because E1 and E2 both are vectors and they are at right angle. E1 E2 vector है और at right angle पर है. Let this angle is theta, but theta is taken here, so it is theta dash and it is 90. So electric field by vector method E is equal to root E1 square plus E2 square plus 2 E1 E2 cos 90. As cos 90 is 0, so it will be equal root E1 square plus E2 square. Cos 90 is equal to 0. Now we will put the value of E1 and E2 in this formula and easily can calculate the net electric field at C by parallelogram method. E is equal to E1 square. What is E1? E1 was 1 by 4 pi epsilon naught 2p cos theta upon r cube and its square plus 1 by 4 pi epsilon naught p sin theta E2, value of E2 was r cube and its square. Now we will solve it. It will be common from will taken outside from the square as well as p also. इसको हम स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे. सो इट विल बी 1 by 4 pi epsilon naught p upon r cube and what remain left inside the root. रूट में क्या लेफ्ट रहेगा, क्या बचेगा? 2 cos theta and its square. So it will be 4 cos square theta plus sin theta and its square plus sin square theta.
Now we can easily write it as 4 pi epsilon naught P upon r cube, and 4 cos स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसको 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये होगा 4 cos स्क्वायर थीटा, एंड एज इट इज प्लस sin स्क्वायर थीटा, and it is 1 which is inside the bracket, it will be 1 value of it, so formula will be 1 by 4 pi, और you can write k also, इसको आप k भी लिख सकते हैं, 4 pi epsilon naught p by r cube and root 1 plus 3 cos square theta, ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो. एंड नाउ लिसन, इफ पॉइंट C in axial position, so value of theta will be 0, and if this point is lies here, अगर point C यहाँ पर है इक्वाटोरियल पोजिशन में, then value of theta will be 90 degree. Direction of this electric field will be as shown in diagram. It will be the direction of resultant. This is E, vector E, and you can say this is K, suppose, or any other point. Direction will be along C to K, along C. First, for axial position, theta की वैल्यू we will take theta is equal to 0 degree, and second, for equatorial position theta is equal to 90 degree. ये हमारी दो स्पेशल कंडीशन हो जाती हैं, बट इट इज द जनरल फॉर्मूला. अगेन क्लियर, इट इज क्लियर. नाउ टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को कहाँ प्लेस करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर एक टॉर्क लगता है, मीन्स कपल ऑफ फोर्स, एंड दिस कपल ऑफ फोर्स और टॉर्क ट्राई टू अलाइन द डाइपोल अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड. ये टॉर्क जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसके अलोंग, किसके अलाइन करना चाहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के. सपोज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी मेड बाय माइनस क्यू प्लस क्यू चार्जेस ऑफ लेंथ 2a. कोई डाइपोल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से कितने एंगल पर प्लेस किया हुआ है हमने, सपोज हमने इसको प्लेस किया हुआ है थीटा एंगल पर. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इस पर कितना टॉर्क एक्ट करा है. वी नो दैट फोर्स ऑन ए चार्ज बाय फील्ड इज F equals QE, and direction of this force on positive charge along electric field, on negative charge opposite to the electric field. नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है. लेट डाइपोल ए बी इज प्लेस्ड at an angle theta to the uniform electric field E. Then it experiences two equal opposite forces acting on different lines. Then a couple of force act on it as shown in figure.
जैसा फिगर में शो किया गया, एंड दे मेक अ कपल. दिस कपल try to align the dipole with electric field. So torque, according to definition, any one force into perpendicular distance between line of action of forces, line of action, two line of action different points पे लगेंगे. So tau equals force QE and perpendicular distance is distance BC. So tau equal QE and distance BC from this triangle, इस triangle से find कर लेंगे आप इसको in terms of 2a and theta. So we want to find the perpendicular and this is hypotenuse. So perpendicular upon hypotenuse is sin theta, 2a sin theta. But q into 2a is equal to p, so it is pe sin theta. As q into 2a is equal to p, electric dipole moment. This is the torque acting on the electric dipole. Now maximum and minimum. If theta equals 0 degree, then tau equals 0. Minimum. इसको क्या बोलेंगे आप? Stable position. It is very important for the point of view of board exam. Board exam के जिसे इसका डायग्राम आता है, stable position और stable equilibrium. कैसे? In this situation, this is electric field and this is dipole, minus q and plus q. ये stable position होती है. Second is if theta is equal to 90 degree, अगर perpendicular रख दें इसको, ऐसे रखा हो, then what will happen? Tau will be maximum. Why? Because sin 90 is equal to 1, so it is P maximum. It is the value of maximum torque. We can easily define on the basis of, we can define the P on the basis of torque, assuming by theta 90 and assuming E as 1. थीटा को 90 और E को 1 एज्यूम करके हम P को डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टॉर्क. डेफिनेशन ऑफ P. How? If theta equal 90 degree and E equals 1 Newton per coulomb, then what will happen? Then P is equal to tau maximum. तो आप डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट उस टॉर्क के इक्वल होगा, उस मैक्सिमम टॉर्क के इक्वल होगा जो उस डाइपोल को यूनिट इंटेंसिटी के इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखने पर लगेगा. मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके.